रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलका है मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 Hey guys, this is me Abba and welcome back to my channel, and in this video I'll be doing a Navratri makeup tutorial. I hope you will like this one as I have already posted one Durga Puja makeup look on my channel. If you haven't watched yet, please do check that out. And this video is going to be super long lasting one and a sweat proof makeup. So without any further delay, let's start the video. So here I'm going to tell you how to achieve this look, and I'm going to start my makeup look by completing my eye makeup. So here I'm using Maybelline Fit Me Concealer to prepare my eyebrows, and this will give my eyebrows a studio finish look. And as I have started my eye makeup, so please carefully watch this video step by step. And I'm using the same concealer to prepare my eye makeup base. If you want to do the same, go ahead. And I'm going to merge all the concealer part by help of this Color Bar Beauty Blender. This one is a great makeup sponge as well as budget friendly, and I really love this one. And here I'm gonna fill my eyebrows with the help of this brush and brow powder. If you want to use any other eye pencil or eyebrow pencil, you can use that. So as I'm having uneven eyebrows, so I'm gonna give a proper shape. And if you have already pretty eyebrows, just skip this process. Now I'm using light shade from the Wet n Wild contour palette to set my eye makeup base. And I'm using the Sheen makeup brush to apply this contour. Now I'm done with my eye makeup base. Let's move to final eye makeup. And I'm using the darkest pink color from Nicka K Newyork Eye Palette. And to apply this eye color, I'm using Maybelline eye makeup brush, which I got as a free gift from Maybelline New York. So this is how you need to apply eyeshadow on your eyes. Next I pick pinkish purple color from the Nude Eye Palette Maybelline New York. And I'm gonna apply this color on my eye crease. So now I'm gonna add some sparkle on my eyes. And I'm gonna use this pearl highlighter from this blush on palette. You need to apply sparkles or glitter very carefully. And here I'm using flat brush to apply this highlighter. Here I'm using this Wet n Wild clear solution to fix my eyebrows. Here I'm using Nykaa Rock the Line Kajal as an eye pencil or eyeliner, you can say. This is how you need to apply eyeliner or eye pencil. I'm gonna apply this kajal under my eyeline and both corner of my eyes. और इस काजल की मदद से मैं अपने आईज को थोड़ा विंग लुक देते हुए आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर के साइड में थोड़ा मोटा आईलाइनर अप्लाई करूंगी और उसके बाद अपने आईज के दोनों कॉर्नर्स को फिल कर दूंगी. This is how I use eye pencil or eye kajal. If you have any other trick, you can go ahead. Now I'm using Lakme Absolute Gel Eyeliner to finish my eyeliner part. Now I'm gonna finish my eye makeup, and again I'm using Wet n Wild clear solution to give some volume to my eyelashes. As I don't use false eyelashes, I'm just using this clear solution. मैंने आपको already अपने पहले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है कि अगर आप इस solution को use करते हो तो आप naturally अपने eyelashes को अच्छा खासा volume दे सकते हो. Now I'm gonna use this Maybelline Lash Sensational mascara to give a little more volume to my eyelashes. And you have to apply this mascara very carefully, very smoothly. और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी आपको इस मस्कारा की यूज़ करनी है अपनी लैशेस पे अप्लाई करने के लिए. Now here I'm done with my makeup and now I'm gonna prepare my face.
So before applying makeup, I'm gonna prepare my skin with this Maybelline Master Prime Primer. This one is a cream-based primer for oily skin. As I have a combination skin, I'm gonna use this one only. Now I'm using this foundation, which is 24 Hour Super Stay Foundation, again from Maybelline, New York. Now this is how you need to apply and blend foundation on your face. And as this one is a full coverage foundation, you need to use 2 or 3 drops. That's it. Guys, नवरात्रि मेकअप लुक के साथ साथ मेरा नेक्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल गरबा मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। Now I'm done with the foundation part, and I'm again using this Maybelline Fit Me Concealer, which is a natural beige color. And as my foundation is a full coverage foundation, I'm using this concealer on a little part of my face. And again, I am using Color Bar Beauty Blender to merge this concealer on my face. So after highlighting, I'm going to contour my face. And I'm going to use darkest brown color from LA Girl Concealer. And this concealer has amazing finish. Next, I'm again using this Wet n Wild contour palette, and I'm gonna add some shadow on my face. And I'm using the taupe color from the palette to form my face. So this is how I highlight and contour my face. I hope you are enjoying my makeup. Next, I'm gonna apply this Master Fix Loose powder from Maybelline, New York to finish my face makeup. A little quantity of this powder, just sufficient to finish your makeup. Okay. And this one just gives a mattifying effect to your makeup. And here I'm gonna pamper my lips with this Nykaa matte lip color, which is a shade number 09 Khoobsurat. मुझे ये शेड बहुत पसंद है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कलर की हर तरह की स्किन टोन पर सूट करता है। अब क्योंकि मैंने पिंक स्मोकी आई लुक कैरी किया, इसलिए मैं ये लाइट पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ मेरे लिप्स पे। ये आई एम डन विद द बेसिक थिंग, एंड आई एम गोना पैम्पर एप्पल ऑफ माय फेस बाय यूजिंग दीज 2 कलर फ्रॉम द LA कलर ब्लश ऑन पैलेट। थोड़ा सा चर्बी लुक देने के लिए मैं अपने चीक्स के फुल पार्ट को कवर करूंगी इस ब्लश ऑन से। अब मैं नायका रॉक द लाइन काजल की मदद से अपने आई मेकअप को फिनिश लुक दे रही हूँ। एंड फिनिश लुक देने के लिए मैंने आईज के दोनों कॉर्नर में थोड़ा सा काजल और ऐड कर दिया है। इससे मेरी आईज को एक इंटेंस लुक मिलेगा और मेरी आईज थोड़ी सी डीप डार्क दिखेंगी। अपनी आईज को थोड़ा सा और स्मोकी लुक देने के लिए मैं निका के न्यूयॉर्क पैलेट से ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं अपनी लोअर आईलाइन पर लाइटली अप्लाई करूंगी। बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में इसे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ पे मिक्स करना है। आई एम गोना यूज दिस रियल टेक्निक आई मेकअप ब्रश। नौ मैं सराउंड ब्रश और मेकअप रिवॉल्यूशन के इस वॉश गोल्ड कलर की मदद से अपने आईज के फुलेस्ट पार्ट को हाईलाइट कर रही हूँ। लेट्स फिनिश दिस मेकअप बाय यूजिंग अ पर्ल हाइलाइटर फ्रॉम द LA कलर्स ब्लश ऑन पैलेट। और इस फैन ब्रश की मदद से मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में हाइलाइटर लेकर के अपने पूरे फेस के हाईएस्ट पॉइंट पर अप्लाई कर रही हूँ।
and you are just a minute away from this salon finish sweat proof Navratri makeup. So I'm done with everything and I'm gonna use this Wet n Wild makeup fixer. So guys, everything is done and I'm ready to enjoy Navratri. And here I'm gonna team up my black saree with silver jewelry. रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ